Hello bachcho, let's read the question here. The question says, assertion, virus is an obligate parasite, and the reason given for this is that virus is host specific. Let's look at the assertion and the reason one by one. Assertion कहता है कि virus एक obligate parasite है, एक absolutely correct statement है. क्यों? Because virus को अगर exist करना है, उसको एक living tissue चाहिए. Virus for its existence requires a living tissue. अगर ये living tissue नहीं है, then outside the living tissue virus will exist in the form of a protein. और जैसा हमको पता है कि protein is actually non-living. And if the virus wants to live, it necessarily requires a living tissue. That's why virus is a parasite, because it is dependent upon the living tissue, and it's obligatory a parasite because outside the living tissue it's a protein, meaning it's non-living. However, the reason given here is virus is host specific. This is also an absolutely correct statement, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक वायरस है, समझो ये वायरस अफेक्ट करता है फिश को. फिश में भी ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ फिश को अफेक्ट करेगा. However, since fish humans खाते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये वायरस humans में भी एंटर हो चुका है. ये वायरस humans को अफेक्ट नहीं करेगा because virus is known to be host specific, यानी कि एक पर्टिकुलर होस्ट के साथ ही it can act as a virus. Otherwise in humans it will be like a normal protein. तो ये समझने के बाद we need to understand whether reason is the correct explanation for the assertion or not. तो इसका ट्रिक यही होता है कि आप assertion बोलो और उसके बाद because लगा के reason बोलो. Meaning virus is an obligate parasite because virus is host specific. अब ये sound करने को थोड़ा incorrect लगेगा because even if, let's assume कि even if the virus is not host specific, assuming that virus is not host specific, right? Virus is not host specific. इसके बाद भी अगर it can also exist with multiple hosts, it means that it is still acting as an obligate parasite. तो host specific होना जरूरी नहीं है एक वायरस के लिए obligate parasite act करने के लिए. तो obviously इसका correct answer हो जाना चाहिए general format में option B. That is, assertion is true, reason is true, but reason is not a correct explanation for the assertion. Right? तो अगर हम इसको summarize करते हैं, वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, ये भी एक करेक्ट है. इसकी वजह से असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन बिकॉज वायरस का होस्ट स्पेसिफिक होना इज नॉट इवन रिलेटेड टू इट बीइंग एन ऑब्लिगेट पैरासाइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.